आवाज बढ़ाओ यार मिशन की। तेरी बाकी अदाने ओ सांवरे तेरी टेढ़ी। हेलो एवरीवन, शुरू से शुरू करती हूँ। सबसे पहले उत्तराखंड में अपना फिट चेक लेने के बाद मैं दिल्ली पहुँच गई। दिल्ली से ब्यूटीफुल सनसेट के साथ हरिद्वार के सुंदर नज़ारे देखते हुए, मैंडेटरी कैमरा एंगल चेक करते हुए रास्ते में हमने कोकोनट वाटर खाया मलाई वाला और थोड़ी सी स्किल अपडेट करी, क्योंकि मेरा एम बस एक कम्युनिटी बिल्ड करना है। अब चाहे वो कोकोनट वाटर बेच के हो या यूट्यूब चैनल से। और फिर मैं गाऊंगी तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। हंसते खेलते गाते हुए हम लोग अपने रिजॉर्ट पहुंच गए। हमने लंच करा और फिर मैंने रियलाइज़ करा कि इसकी कैप उसका चश्मा। तो मैं इनका यूज़ कर लूँगी, पर सनस्क्रीन मुझे अपना ही लेना पड़ेगा। तो हम मार्केट गए ऋषिकेश की, हमने वहाँ से सनस्क्रीन लिया और कुछ मैंडेटरी चीज़ें ली जो मैं भूल गई थी घर में एज़ यूजुअल। वापस रिजॉर्ट आए और हमने दिन भर रेस्ट किया। दिन भर रेस्ट करने के बाद डेफिनेटली रात को हम लोग निकल गए लॉन्ग ड्राइव पर। And that long drive was really special for me because that night I met people and multiple people who were not shocking of alcohol. And that was a rare thing to find out because मैंने नोटिस करा है आजकल यूथ को ड्राइव करते हुए अल्कोहल पीना बहुत पसंद है, and I am strictly against drink and drive. So I was happy meeting people who didn't need any kind of fuel to laugh, sing, dance, or we can say that they didn't need the liquid fuel to live. Next morning was beautiful. I did a light breakfast at our resort and left for the adventures that were waiting for us. डरते डरते हम उस शॉप में पहुंचे। वहां पर जाके हमने अग्रीमेंट साइन करा कि ओके वी आर फाइन विद एवरीथिंग दैट विल हैपन टू अस, बट इट टर्न्ड आउट टू बी समथिंग लाइक दिस। Having that being said, there's a complete different video on my account about my rafting experience that is purely unfiltered and real. You must check that out also. After rafting, we went for some momo hunting in Rishikesh. And guess what? We found the tastiest momo that one could find in Rishikesh, I guess. And it was so tasty that all the tiredness disappeared with just first bite. And then it was time for the most awaited moment of my life, bungee jumping. After thinking of this moment for almost 10 or 12 years, I was finally standing at the ramp, but at this very moment, I was contemplating all my life decisions, that on what basis do I decide? There are many cinematic videos of this moment in my different social media accounts with different background music, but here I will talk. At this very moment, I was very afraid, I will not lie. The depth was what it was, and the fear was what it was. But it made me realize that this is what life is. How big of us as we think actually, but how small we are. A little water, a little height can tell us the reality of ourselves, of this life. We did much more fun, थोड़ा सा हमने cricket खेला, and then we returned back to our home. Subscribe almost twice for more such videos and stories.